Hello everyone, welcome to your English class. Today's topic is tenses. This is my first video of tenses. What are tenses? Dear students, tenses are words or phrases that express time of an action being done. Tenses वो words और phrases होते हैं जो एक्शन के होने वाले टाइम को एक्सप्रेस करते हैं. कहने का मतलब किस टाइम कोई एक्शन हो रहा है उस टाइम को डिनोट करते हैं टेंसेस. टाइप्स और काइंड्स ऑफ टेंस. डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ अकरेंस, टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, future tense. Now let's discuss the very first tense, that is present tense. A present tense expresses action that is going on at the present time or action that is continuing or habitual. Present tense हमें उन actions के बारे में बताते हैं जो कि present time में हो रहे होते हैं या continue होते हैं या फिर habitual होते हैं. Present tense is classified in four kinds as follows: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Firstly, we'll discuss about present indefinite or simple tense. Present indefinite tense expresses an action which happens on a regular basis. It is used to express habitual action, to express fixed future event, to express general truth, and in exclamatory sentence beginning with here or there. यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं जो कि रेगुलर बेसिस में होता है और एक हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करता है या फिर फ्यूचर में किसी इवेंट में होने वाला कोई फिक्स्ड इवेंट जो होने वाला है फ्यूचर में उसको एक्सप्रेस करता है या फिर जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस करता है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर जब कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम हेयर से बिगनिंग करते हैं, हेयर से शुरुआत करते हैं या देयर से स्टार्टिंग करते हैं तो वो सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, द ट्रेन लीव्स एट 5:20, देयर शी गोज. Structure of the sentence. Affirmative sentence. How do we form affirmative sentence? It's being told here with the help of structure. Dear students, as we all know that whenever we form English sentences, we always place subject on the first position, then we place verb on the second position, and at the end we place object. Whereas in the Hindi sentences, the formation of sentence is subject, object and verb. Now we are talking about English sentences, and I will tell you how to form affirmative sentences of simple present tense. Firstly, we will put subject, then we will put first form of the verb plus object, and it's also being mentioned here as you can see. Add s or es to verb if subject is singular. यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो हम लोग एस या ई एस वर्ब के साथ तब जोड़ते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल. नेगेटिव सेंटेंस. Subject plus do or does plus not plus verb first form plus object. Example, he does not play football. Interrogative sentence. How do we form interrogative sentence? Dear students, as you all know that interrogative sentences can be formed in two ways. With the help of QW. QW means question words, and with the help of helping verbs or auxiliary verbs, that is do, does or do or does.
Now here, as we are talking about present tenses, firstly I will tell you how to use this same rule structure of the sentence to form interrogative sentences in both ways. Dear students, as it's given over here, QW plus do or does plus subject plus not plus verbs first form plus object plus question mark. We will place does in the beginning. We will not use QW if we are forming a sentence with auxiliary verbs. अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम QW यानी क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज़ करेंगे. डू और डज से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल. अगर हम इंट्रोगेटिव वर्ड वाला मीन्स क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस विच इज गिवन. As I have used here when, the word when, which is a question word, I have placed it in the beginning, and then I have used the auxiliary verb do or does according to the subject as it was told in the beginning. Subject के अकॉर्डिंग हमने डू या डज का यूज़ किया है. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डज का यूज़ करना पड़ेगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें डू का यूज़ करना पड़ेगा. व्हेन डज ही प्ले फुटबॉल question mark. Dear students, you all must remember this thing, that unless and until you put question mark, the sentence will not be referred as interrogative. अगर आप नहीं लगाते हैं question mark तो sentence जो है interrogative नहीं कहलाया जाएगा. आप question mark लगाएंगे तभी sentence perfectly interrogative कहलाया जाएगा. Now let's move on to our next topic, that is note. These are the things which you should keep in mind while converting your sentence into simple present tense. Dear students, as we have read in the structure of sentences that we have, if the subject is singular, we have to add s or es to the first form of the verb. Then you must be wondering when to use es and when to use s with the verb. That is being told over here. Verbs ending with s, z, x, ch, sh. Whenever the verbs are ending with s, z, ch and sh, add es. जब कभी भी verbs s, z, x, ch या sh पर फिनिश होते हैं तो आपको es जोड़ना होगा. Other verbs we add, जब दूसरे verbs होंगे तो हम क्या करेंगे, s जोड़ेंगे. We will add s to it. Now let's discuss about the use of do and does. Dear students, does is used with singular subjects. Example, he, she, it, Sita, Ravi, etc. जब कभी भी singular subjects होंगे जैसे he, she, it या सीता या रवि या किसी भी person का नाम, तो हम does का यूज़ करेंगे simple present tense में. Do is always used with the plural sentence. Do हमेशा plural sentences प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है. इट्स गिवन सेंटेंस बाय मिस्टेक ओवर हियर. यू ऑल जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट डू इज ऑलवेज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट. एग्जाम्पल, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स एक्सेट्रा. जब कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम डू का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, यू, वी, दे, boys, girls. Now let's discuss about the next topic, that is present continuous or progressive tense. It describes an action which is continuously going on at the time of speaking. It is used for an action going on at the time of speaking, for action which is likely to continue tomorrow also but may not be happening at the time of speaking, for an action that is to take place in near future. Present continuous या प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि डिस्क्राइब्स एन एक्शन. ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है विच इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, जो कंटिन्यूसली हो रहा है ऑन द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलने के समय में वो कंटिन्यू हो रहा है. यहाँ पर आपको
मेन पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि बेसिकली ये किसके लिए यूज़ होता है. फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो बात करने के टाइम पर कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा है उसके लिए. फॉर एक्शन विच इज़ लाइकली टू कंटिन्यू टुमारो ऑल्सो, एक ऐसा एक्शन जो कल भी कंटिन्यू होगा बट मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन जिस समय बताया जा रहा है उस टाइम नहीं हो रहा हो. फॉर एन एक्शन दैट इज़ टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, कोई ऐसा एक्शन जो नियर फ्यूचर में मतलब कुछ ही समय में होने वाला हो. एग्जाम्पल, शी इज सिंगिंग, I am reading the Times of India these days. Dear students, as it was given in point number 2 that present continuous tense describes an action which is likely to continue tomorrow also but may not be happening at the time of speaking. Example number 2 is referring to that point. My uncle is arriving tomorrow. Now let's discuss the structure of the sentence. Affirmative sentence, subject plus is rm plus verb first form plus ing plus object. Example, I am playing football, he is playing football. Negative sentence, subject plus is rm plus not plus verb first form plus ing plus object. Example, he is not playing football. Interrogative sentence, QW plus is rm plus subject plus not plus verb first form plus ing plus object plus question mark. Dear students, as I have told you that interrogative sentences, the structure of interrogative sentences which is given here can be used in two ways. It can be used for making auxiliary sentences, making interrogative sentences with auxiliary verbs, and for making interrogative sentences with question words. For example, is he not playing football? This sentence is starting from an auxiliary verb. Where is he playing football? This sentence is starting with a question word. Note, is always used with singular subject. Example, he, she, it, Sita, Ravi, etc. Are is always used with plural sentence. Example, you, we, they, boys, girls, etc. Am is always used with I. Moving on to our next topic, that is present perfect tense. It refers to an action that either occurred at an indefinite time in the past or began in the past and continued to the present time. It is used to indicate activities completed in the immediate past, to describe past events which affects the present, to denote action that began in some past time and continued up to the present. यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस उन एक्शंस को रेफर करते हैं जो कि इंडेफिनेट टाइम में, मतलब जो डेफिनेट ना हो इस टाइप के टाइम में स्टार्ट हुआ हो पास्ट में, या फिर पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट तक आ गया हो. ये एक ऐसे एक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं जो कि इमीडिएट पास्ट में ही कंप्लीट हुई होती है. इमीडिएट पास्ट मीन्स अभी कुछ समय पहले कंप्लीट हुई हो. एग्जाम्पल्स देखेंगे हम. He has just gone out. I have cut my finger. We have not seen Padma for several years. This is seen, dear students, it's given here by mistake. I forgot to check the spelling here. It's seen. ये seen है यहाँ पर. Seen Padma for several years. Structure of the sentence. Affirmative sentence. Subject plus has, have plus verb third form plus object. Example, I have played football. He has played football. Negative sentence. Subject plus has, have plus not plus verb third form plus object. Example, he has not played football. Interrogative sentences. QW plus has, have plus subject plus not plus verb third form plus object plus question mark. Example, has he not played football? This is a sentence with starting with an auxiliary verb.
When has he played football? Note: has is used with singular subjects like he, she, it, Ram and Sonal, etc. Have is used with plural subjects you, we, they, I, boys, girls, etc. Present perfect tense. It expresses an action that began in some point of time in past and still continuing. It sometimes refers to an action which has already been finished. यहाँ पर बता रहे हैं कि ये उस एक्शन को रिफ़र करता है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. ये एक्सप्रेस करता है या रिफ़र करता है एक ऐसे एक्शन को विच हैज़ ऑलरेडी बीन फिनिश्ड. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये उस एक्शन को भी रिफ़र करता है जो ऑलरेडी फिनिश हो चुका होता है. एग्जाम्पल: दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock. Dear students, as you can understand from this sentence that what is being said in the definition of this present perfect continuous tense, it's being shown up in this sentence. They have been playing since 4 o'clock. यहाँ पर साफ पता चल रहा है जो ऊपर बोला गया था कि एक पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यू हो रहा है. They have been playing since 4 o'clock means वो 4 बजे से खेल रहे हैं, मीन्स अभी भी खेल रहे हैं. दे आर continuously playing till now. Sentence number 2. I have been watering the garden when brother came. मैं गार्डन में वाटर कर रहा था, मतलब पानी लगा रहा था जब ब्रदर आया. ये जो सेकंड पॉइंट बोला गया था कि ये कभी कभी ऐसे एक्शन को रिफ़र करता है जो कि ऑलरेडी फिनिश हो चुका होता है. Structure of the sentence. Affirmative sentence. Subject plus has have plus been plus verb first form plus ing plus object plus since here for plus time. Example: I have been playing football since morning. He has been playing football for 2 hours. Negative sentence. Subject plus has have plus not plus been plus verb first form plus ing plus object plus since or for plus time. Example: he has not been playing football since morning. Interrogative sentence. QW plus has have plus subject plus not been plus verb first form plus ing plus object plus since or for plus time plus question mark. Example: has he not been playing football since morning? Where has he been playing football for 2 hours? Note: has is used with singular subjects as we have read before also in perfect sentences. It is used with he, she, it, Ram, Sonal. Have is used with plural subjects you, we, they, I, boys, girls. Since is used to denote a specific point of time. Dear students, it's being told, you must be wondering that in the structure of the sentence since and for are given. How we will use since and for, कैसे use करेंगे since को, कैसे use करेंगे for को, सोच रहे होंगे. Dear students, since is used to denote a specific point of time. एक specific point of time को बताता है since. तो जैसे example दिया गया है कि morning 2 o'clock May 1991. इस टाइप से अगर जब भी आपको टाइम बताया जा रहा है सेंटेंस के अंदर तो आप सिंस का यूज़ करेंगे. देन यू विल राइट द टाइम विच इज़ बीइंग मेंशन्ड इन द सेंटेंस. फॉर इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ टाइम पीरियड. फॉर जो है एक टाइम पीरियड को बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर कुछ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टाइम, 2 hours, 1 month, 3 years. अगर इस टाइप से आपको कभी टाइम जो है बताया गया है सेंटेंस के अंदर तो आप सेंटेंस को बनाते टाइम फॉर का यूज़ करेंगे
और ये जो टाइम है वो आप बाद में लगाएंगे, फॉर के बाद लगाएंगे, जैसे फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर 2 hours, फॉर 1 month, फॉर 3 years or for 10 minutes. I hope you all have understood today's topic, present tense. Thank you and have a good day.